Okay, so today we'll start the topic speed. Speed, what is speed? Distance traveled by time taken. If suppose you are moving from Gaya to Patna, okay, so if the distance traveled you know and the time taken is known to you, suppose the distance covered is what? 100 kilometer. Okay, distance covered is what? 100 kilometer in how many hours? In 3 hours. Okay, so with this you will come to know about what? You will come to know about the speed. But is that speed telling you the direction in which the train is going? Are you knowing the direction? You are just knowing the distance. You are knowing the time taken, which is taken to cover this 100 kilometer in 3 hours. Will give you the speed, but you will not know the direction. That in which direction the train was moving. Okay, but velocity. What is velocity? Velocity क्या है? तो velocity is speed with time. Speed with time. Okay. With direction, ma'am. हाँ, speed. Yes, sorry. Speed with direction. Okay. Speed with direction is what? Is velocity. Both the thing is same. अगर सिर्फ कहा जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या है? स्पीड है. अगर कहा जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर इन north direction, then this is what? This is velocity. ये क्या हो जाएगा? Velocity हो जाएगा. And we know that speed with time. यहाँ पे velocity क्या हो जाएगा? Distance with direction. Okay. Will give you what? Give you velocity. तो Velocity. ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? In place of this, what we will write? We can write displacement. क्या हो जाएगा ये? ये displacement हो जाएगा. Speed क्या है? Distance by time. And velocity क्या है? Displacement by time. Is it okay, everybody? Yes, ma'am. Speed can be 0 or not, tell me. No, ma'am. कभी भी स्पीड 0 हो सकता है? Yes, ma'am. स्पीड कभी भी 0 No, नहीं होगा. लेकिन No, वेलोसिटी जो है वो 0 हो सकता है. किस कंडीशन में 0 होगा? जब मेरा इनिशियल और फाइनल जब पोजीशन सेम इनिशियल हो और जाए. फाइनल सेम होगा. फाइनल और इनिशियल दोनों का पोजीशन सेम होगा. जब इनिशियल एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? वेलोसिटी विल बी 0. Okay, otherwise it will be always what? Always be same. और क्या बता रहे थे? 9E, tell me. 9B. मैम बताए थे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. हाँ, स्केलर और वेक्टर तो है ही. इससे पता चल जा रहा है क्योंकि ये क्या विदाउट डायरेक्शन है, और विद डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? वेक्टर होगा. और जो विदाउट डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा. Anything else? Any Average velocity. एवरेज वेलोसिटी. वेलोसिटी. हाँ, सबसे पहले तो हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा? It means that it will cover equal distances in equal interval of time. Yes, ma'am. When it Yes, covers, ma'am. suppose I am taking A, B. This is 10 kilometer, 20 kilometer,
30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर। यहाँ पर कितने का है डिफरेंस? कितने का है? 10-10 का है, 10 का है। और ये सब कवर करता है 1 आवर में, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। तो व्हाट इट विल बी? It will be uniform speed. Uniform motion. Yes, ma'am. For each condition, when you will take out for point A, you will take out for point B. Each time you will get the same. Yes, ma'am. So, when there is equal distances covered in equal interval of time, that is called what? Uniform speed. But when there will be unequal distances in equal, suppose this is 10, this is 40, then this is 20, again it is 30, and then it is 25. So what it is showing? Equal time interval, Non-uniform. but in unequal distances. Unequal distances in equal time interval will give you what? Non-uniform speed. Okay? ये कैसा मिलेगा आपको? Non-uniform. तो स्पीड दो टाइप का है, एक है यूनिफॉर्म स्पीड, एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीड? Ma'am, train. Speed of light in vacuum and air. Ma'am, train. What? Ma'am, car moving. Ma'am, Speed of light, ma'am. Ma'am, fan. Ma'am, bicycle. Revolution of Earth. Ma'am, speed of light. Speed of light, yes, speed of light. Speed of light क्या है? 3 into 10 to the power meter per second in air or vacuum. It will be same. It's not going to change. So speed Rotation of light of is Earth. uniform speed, and then a Revolution train of Earth. that is moving in a straight path, a car moving in a straight rectilinear path is also an example of what? Uniform speed. Uniform speed. Revolution of Earth. देखो स्पीड में somebody is writing example fan, तो will it be the example? स्पीड का एग्जाम्पल होगा उसमें। तो डायरेक्शन हर मोमेंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। Yes, ma'am. नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म में किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? Freely falling object. फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। अब जैसे यहाँ से हम 10 गिराएंगे, ठीक है, तो एवरी मोमेंट उसका क्या स्पीड जो होगा वो चेंज होगा। So it is an example of what? Non-uniform speed. Then a landing of sound. aeroplane. When the aeroplane is landing, Non-uniform. what you will say? That is also an example of what? Non-uniform speed. Bicycle is moving in a traffic. Yes, that is also an example of what? Non-uniform speed. Because all the time the speed will not be same. वहां पर सब टाइम स्पीड तो सेम नहीं होगा। So that is what? Example of non-uniform speed. Okay, next यहाँ पर आता है average speed. Average speed. So what is average speed? Total distance covered by total time taken. Total distance that will be covered and total time that will be taken will give you what? Average speed. अब जैसे क्लास में हमको मार्क्स एवरेज मार्क्स निकालना होता है या आप खुद का अपना एवरेज मार्क्स निकालते हैं तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यू गेट द एवरेज दैट हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन एवरेज. So similarly, when you want average speed, in that condition you will add the total distance. It will be equal to what? Total distance by total time taken. Total distance by total time taken. What? Average speed. And what is the SI unit of speed? मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. ये मीटर में होता है और ये सेकंड में, तो इसका हो क्या जाएगा? मीटर पर
per second. second. SI unit will be meter per second. ओके, क्या एवरेज स्पीड जो है कभी भी 0 आएगा? एवरेज स्पीड No, ma'am. never, never, never. Average speed never. It is going to come what? 0. Okay. Now let's see about velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? मैम अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो तब कांस्टेंट सेम डायरेक्शन में भी मैम, और सेम डायरेक्शन constant speed and same direction. Direction is not going to change. If it covers what? Have same speed in the same direction with same, then in that condition, what it will be called as? Uniform velocity. Uniform velocity. किस कंडीशन में होगा? Same speed and same direction. Same speed and same direction. Then it will be what? Uniform velocity. Example क्या हो जाएगा? वही एग्जाम्पल हम ले लेंगे. क्या लेंगे एग्जाम्पल बताओ? जब कोई कार है स्ट्रेट लाइन में और वो ट्रैफिक में नहीं है, it is moving on NH or highway, then it will be an example of what? Uniform वेलोसिटी. मैम स्पीड ऑफ लाइट हो सकता है. स्पीड ऑफ लाइट का कोई डायरेक्शन है? नो मैम, डायरेक्शन तो नहीं है. तो हम जब भी वेलोसिटी की बात करेंगे, we will talk about what? We will talk about direction. डायरेक्शन. Okay. यस मैम. Non-uniform means what? Non-uniform velocity का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन बदलेगा. डायरेक्शन बदलेगा. या फिर वेलोसिटी हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर चाहे तो हम स्पीड चेंज करेंगे या फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे और चेंज बोथ. These are the three ways by which we can change the velocity. Yes, ma'am. Okay, then only it will be non-uniform. Non-uniform में क्या होना चाहिए? चाहे तो स्पीड चेंज होगा, चाहे तो डायरेक्शन चेंज होगा, या दोनों ही चेंज हो सकता है. तो स्पीड चेंज कब होगा? जब किसी भी हम क्राउडेड प्लेस में है, that car is moving, or in a spiral road when the car is moving. When the car is moving in a spiral road, then each time the direction is changing as well as the speed is changing. Yes, ma'am. Isn't it or not? And here in this condition, यहाँ पर जो है, जब लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन होता है तो वहां पर भी क्या होगा? स्पीड चेंज होता है. स्पीड चेंज होता है. तो हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, चाहे तो स्पीड को चेंज करके या डायरेक्शन को चेंज करके. मान लो यहाँ से कार ऐसे आ रहा है, फिर ये इस तरफ मूव कर दिया. ये मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, यहाँ पर भी मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से. तो क्या यहाँ पर जो ये मूवमेंट है ये यूनिफॉर्म हो जाएगा? यहाँ पर वेलोसिटी जो है इसका यूनिफॉर्म कहलाएगा या नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म. It will be non-uniform. Why non-uniform? Because direction changes. Direction, and now it has changed its direction in this. So what it is? That is non-uniform. Non-uniform velocity. This is what? Non-uniform velocity. Okay, everyone? Yes, ma'am. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी आप लोग को. Now similarly, like total average speed, there is average velocity. Yes, ma'am.
So what is average velocity? That is total v plus u by t. by total टाइम टेकन, है ना। अब सपोज यहां से कोई यहां आ रहा है ए बी सी डी, ए से स्टार्ट हुआ एंड देन ये वापिस कहाँ आया है, ये वापिस इसी पॉइंट पे आया है। अब इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? What will be its average velocity? Started at point A and reached point A. Initial भी क्या है? A है और final also क्या है? A है. Both is A. Now what will be the displacement in this case? Zero. Zero. Will be zero. But average Zero, speed ma'am. is zero or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Average speed is also zero. No, ma'am. No, ma'am. Average तो speed इसका is हम not zero. एवरेज इसी यही एग्जांपल में से अगर हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोले एवरेज स्पीड, तब इसका एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टेल मी। For the same question, what will be the average speed and what will be the average velocity? मैम टाइम भी शो कर दिए, टाइम नहीं तो एवरेज स्पीड नहीं अच्छा हाँ, निकाल टाइम पाएंगे। नहीं दिए है ना। टाइम सपोज 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड आई एम गिविंग, देन टेक आउट क्विकली। मैम स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी 0। All of you are doing? Is everyone doing? एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम देते हैं। डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा बताओ? 120 किलोमीटर। It will be 120 divided by how much? 12। 12. Okay, then it will be what? 10 meter per second. 10 किलोमीटर मैम। और किलोमीटर आ गई 10। इसको भी आवर में ही कर दो, ये भी आवर ले लो। Take this one hour to simplify the question. So it is 10 kilometer per hour. Yes ma'am. Okay. And now when we are finding out the average velocity, what will be the average velocity? 0. Ma'am, 0. It will be 0 क्योंकि total displacement 0 है, टाइम कितना है 12, तो क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। Yes ma'am. तो आप डिफरेंस में ये लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड कैन नेवर बी 0 बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0। Yes ma'am. In which condition? When initial and final position will be Both Initial are same and initial and is same, displacement is same, then in that condition we can get the average velocity as 0. Okay. Okay everyone. Yes ma'am. Okay, now I'm giving you some question, velocity or speed say, do you have any question? Do you have any question from velocity, speed? No ma'am. Again, let's recall what we have done. Let us recall. Speed and velocity. Okay. What is speed? Speed is equal to distance divided by time. distance by time. अब velocity क्या हो जाएगा? Velocity is equal to
distance with direction. Distance with direction by what? Time. तो distance with direction का मतलब क्या हुआ? That is displacement simply. Displacement by time. Yes, ma'am. Okay. Note it down, all of you. Keep on noting. Now, since it is without any direction, तो ये एक क्या है? Scalar quantity है. And it is with a direction. So it is what? It is a vector quantity. यहाँ पे average speed can never be 0. Average velocity can be 0. Any other point which you can write here? Any other point? ऐसा यूनिट मैम. ऐसा यूनिट तो दोनों का ही सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा यूनिट में. यस मैम. There is no difference. यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्पीड has only magnitude. ये यही वाला पॉइंट हो जाएगा इस तरह से. It has only what? Magnitude. It has both direction And magnitude. and magnitude. Okay. So points of difference is clear. Yes, ma'am. Velocity is nothing, anything different. It's simply what? What it is? When With we are knowing the speed with direction, that will be considered as velocity. Otherwise, अगर सिर्फ लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, एक लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन. अब बताओ ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है? ऊपर वाला मैम स्पीड, नीचे वाला वेलोसिटी. ऊपर वाला स्पीड बता रहा है और नीचे वाला क्या बता रहा है? वेलोसिटी. वेलोसिटी बता रहा है. This is the only difference between speed and velocity. Major difference. बाकी सब डिफरेंस इससे अराइज हो रहा है, कंडीशन अराइज हो रहा है. Is this point clear? यस मैम. इसी के बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है acceleration. So when there will be acceleration, when there will be change in velocity, when there will be any change in velocity, then only there will be acceleration, otherwise there will be no acceleration. If there will be change in velocity, then there will be acceleration with what? With time. Time. With what? With time. If there is no change in velocity, then there will be no acceleration. Means, अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन का 3 कंडीशन होता है. क्या 3 कंडीशन होता है बताओ? क्या 3 कंडीशन होता है? इसको हम लिखते हैं कैसे? चेंज इन, इसको डिनोट करते हैं ए से. ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों हम कहेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी है और वेलोसिटी खुद ही क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. वेलोसिटी का क्या?
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो A is a vector quantity because it is change in velocity. So change means what? We are talking about something initial and something final. Yes, ma'am. तो ये इनिशियल को हम U से इंडिकेट करते हैं, फाइनल को V से. यहाँ पर इसका है आपका मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है. तो ये आपका इनिशियल हुआ और ये आपका फाइनल हुआ. दिस इज चेंज इन वेलोसिटी इन व्हाट, इन सपोज 2 सेकेंड. 2 सेकेंड में वेलोसिटी में क्या चेंजेस आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है 40 मीटर पर सेकेंड. ये डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर. डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, v माइनस यू बाई टी. अब v क्या है, व्हाट इज v? v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड व्हाट इज u? u इज द इनिशियल वेलोसिटी. इन कितना टाइम, तो इन 2 सेकेंड. So you will get to know what was the change in velocity. When there will be change in velocity, only then we can say that there is acceleration. If there is no change in velocity, there is no acceleration. Okay? अगर कोई चीज रेस्ट पर पड़ा है और रेस्ट पर ही है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. हाँ, रेस्ट से अगर वो स्टार्ट हो जाता है या स्टार्ट होकर के रेस्ट पे चला जाता है, then we can say that it is acceleration. Otherwise there is no. उज्जवल कांत इनिशियल, हाँ वो भी फॉर्मूला है. That is also the formula that we will discuss later on. Okay, that was the special case usual. That was the special case which you have written. तो ये आपका क्या है, ये इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे. चाहे तो रेस्ट से स्टार्ट हो जाए या स्टार्ट से रेस्ट पे चला जाए, then only it will be what, it will be acceleration. Otherwise there is no acceleration. If there is uniform velocity throughout, then there is no acceleration. Okay, this we will discuss with example. Tomorrow we will discuss. First of all, write down some question. Note it down. Question लिखो. A bus decreases its speed. एक मिनट. Note down the question which I am giving you. An object travels 16 meter in 4 seconds. 16 meter in 4 seconds. Yes, ma'am. And then another 16 meter in 2 seconds. Another. मैम एक बार फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही. An object travels 16 meter in 4 seconds. And then another 16 minute in 2 seconds. What is the average speed of the object? What is the average speed of the object? Do it. 12 seconds, ma'am. So whenever you get the question, first of all, what you have to do, you have to write down the given, what is given in the question and what you have to find out. You have to write down total speed is equal to what? Total distance by